इमाय धम्मानुधम्मपटिपद्या बुद्धं पूजेमि धम्मं पूजेमि संघं पूजेमि. I worship the Buddha, the Dhamma and the Sangha by practicing in accordance with the Dhamma. May this humble offering be accepted. हम लोग इंद्रियों पे चर्चा कर रहे हैं. 4 इंद्रियों की चर्चा हो चुकी है. आज पन्या इंद्रिय की चर्चा शुरू करेंगे. पन्या कई नामों से जानी जाती है. प्रज्ञा, सम्यक दृष्टि, अंग्रेजी में विजडम, राइट व्यू, वाइज व्यू, डिसर्नमेंट, इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं. और अलग अलग संदर्भ में अलग अलग शब्द भी इस्तेमाल किए गए. जैसे फैक्टर्स ऑफ अवेकनिंग में धम्म विचय कहा जाता है, वो भी पन्या ही है. उस तरह से मीमांसा है, वो भी, उसमें भी पन्या का एलिमेंट काफी जुड़ा हुआ है, जो हमने हिंदी पाद में पढ़ा था. सो इट्स ए widespread term which is of great importance in our practice. और भगवान जो है पन्या के लिए कहा जाता है, इट इज द फोररनर ऑफ ऑल द 8-fold path में जो 8 पार्ट है, उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट पन्या ही है. इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली. चर्चा काफी करते रहते हैं, तो इसलिए शायद ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. तो हम पन्या इंद्रिय की बात कर रहे हैं. तो पन्या इंद्रिय की जो डेफिनेशन हम अभी तक करते आ रहे हैं, वही दट्ठब्ब सूत्र से. तो उसमें भगवान खुद ही प्रश्न पूछते हैं, पन्या इंद्रिय कहाँ मालूम पड़ती है. सो द आंसर इज कथा च भिक्खवे पन्या इंद्रियं दट्ठब्बं चतुसु वर्य सच्चेसु इत्थ पन्या इंद्रियं दट्ठब्बं. 4 आर्य सत्य जो है, वहाँ पे पन्या इंद्रिय दिखाई देगी. तो उसको समझो. दैट इज द एडमोनिशन फ्रॉम द लॉर्ड. वहाँ पे 4 आर्य सत्यों में उसे सम्मादिट्ठी शब्द कहा जाता है 8-fold पाथ में. और उसकी चैंटिंग करते आते हैं, तो उसका सबको याद भी होगा. कथमा च भिक्खवे सम्मादिट्ठी यमको भिक्खवे दुखे ज्ञानम दुख समुदय ज्ञानम दुख निरोधे ज्ञानम दुख निरोध पतिर्नाय ज्ञानम अयम उच्यते भिक्खवे सम्मादिट्ठी. दुख का ज्ञान, दुख के समुदय का ज्ञान, दुख के निरोध का ज्ञान, और उसके निरोध का जो पाथ है, जो रास्ता है, उसको पे कैसे चलना है, उसका ज्ञान. दिस इज द एसेंस ऑफ सम्मादिट्ठी और पन्या और इसकी इम्पोर्टेंस, जैसे कहा, भगवान बार बार कहते हैं, इट इज द फोररनर ऑफ ऑल मेंटल फैक्टर्स व्हिच डिटरमिन्स द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द लिबरेशन. और जो हमने एक और जो स्टैंडर्ड बनाया था इस अपने चर्चा के लिए इंद्रियों की, नगरोपमा सुत्ता, उसमें इसकी तुलना कैसे की गई है. जैसे एक किले की प्रोटेक्शन की बात हो रही है, तो उसमें जो दीवारें हैं किले की, और उनको सपोर्ट दिया गया है, प्लास्टर से सपोर्ट किया गया है, क्योंकि प्लास्टर नहीं होगा तो दीवार कभी भी गिरा जाएगी. सो दैट इज द काइंड ऑफ सिमिली व्हिच द बुद्धा हैज गिवन अस. सो दिस इज just as a royal frontier fortress has ramparts that are high and thick and completely covered with plaster for the protection of those within and to ward off those without. In the same way, a disciple of the noble ones is discerning, endowed with discernment leading to arising of the goal, the noble penetrating leading to the right ending of the curve. So what is the analogy? With discernment at his covering of plaster, the disciple in abundance what is unskillful develops what is skillful, and so it is seen as the fundamental thing which protects us from the external onslaught. क्योंकि प्लास्टर अच्छा नहीं होगा तो दीवार गिर जाएगी. दीवार गिर गई तो फिर तो बचना मुश्किल है, क्योंकि जब तक दीवार है तब तक एक ही गेट है, तो उस गेट पे सती काम कर रही है तो रोक सकते हैं उसको. दीवार ही टूट गई तो फिर तो दीवार टूटने का तात्पर्य क्या हुआ कि हमारी इंद्रियां एक्सपोज हो गई टोटली. चारों 6 की 6 इंद्रियां जो हैं बाहर से उस पर ऑनस्लॉट हो रहा है, and we have lost the ability to handle it. So then obviously
will be done. There will be no possibility of any freedom from suffering. तो इस तरह से हमको उसकी इम्पोर्टेंस को समझने की आवश्यकता है. जैसे अभी बाकी इंद्रियों के बारे में भी हमने किया कि जो भगवान, जो वेनरेबल आनंदा ने महत्वपूर्ण सुत्ता है दीघ निकाय का शुभ सुत्ता, उसमें कैसे डिस्क्राइब किया है. So we'll today also discuss that, because it is given a very beautifully all the essential ingredients, and some of them may be quite surprising to you. It was to me also कि किस किस को वो पन्या में काउंट करना है. So let me locate it. तो पूछ रहे हैं जो टोडैया के पुत्र हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या है. अब कुछ दो बातें तो हो गई थी, शील खंड और समाधि खंड की. अब पूछ रहे हैं पन्या खंड क्या है, बताइए आप क्या है पन्या. So he gives a detailed reply. So I'd like to read it out so that we can बीच में I think इंग्लिश ही पढ़ता हूँ, पाली शायद क्लियर नहीं. भाई जब उन्होंने शील का पालन कर लिया, समाधि का अभ्यास कर लिया ठीक से, और प्योरिफाइड ब्राइट समाधि है उनकी, बिल्कुल स्टडी इम्पर्टरेबल पक्की समाधि हो गई है, उपचार समाधि से ज़्यादा भी अर्पणा समाधि, इस तरह इस लेवल तक काम हो रहा है. तो तब वो इन्वेस्टिगेट करते हैं शरीर के बारे में और अपने, और समझते हैं कि ये जो शरीर, तब उनको बिल्कुल क्लियर समझ आने लगता है कि ये जो शरीर है मेरा, ये 4 मुख्य धातुओं से बना हुआ है, अग्नि जल पृथ्वी वायु. क्योंकि उसकी समाधि इतनी पुष्ट हो गई, उसको बिल्कुल स्पष्ट दिखता है. और वो कैसे सपोर्ट हो रहा है, पैदा कैसे हुआ, माता पिता के संसर्ग से पैदा हुआ, और कैसे बढ़ता जा रहा है. कोई उस समय चावल ज्यादा खाते होंगे तो कहते हैं बिल्ट अप फ्रॉम राइस एंड पॉरेज, एंड देन, और वो समाधि पुष्ट है तो वो क्या कहते हैं, डायरेक्ट्स इट टुवर्ड्स नॉलेज एंड विजन, ज्ञान दर्शन, उस तरफ उसको चित्त को लगाते हैं. तो इट ट्राइज टू फिगर आउट ये शरीर क्या है, कैसे बना, और क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है. तो एकदम वो तो सब सामान्य पता चल जाती है कि इट इज कॉन्स्टेंटली बियरिंग अवे, कॉन्स्टेंटली एरोडिंग, ब्रेकिंग अप, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. और ये भी समझ में आता है कि मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो इस शरीर के साथ चिपकी पड़ी है, एंड देयरफॉर all kinds of things which happen to the body, I'm better taking them personally and suffering. So you understand that, oh, this is the reality. And once you understand that this is the reality, and भगवान एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई एक बहुत अच्छा जैम हो और उनको धागा डाल के उसको गार्लैंड बनाया गया, तो उसको स्पष्ट दिखता है ये जैम बिल्कुल साफ है, ये धागा पीले रंग का है इसमें, तो उस तरह से उसको साफ दिखता है. ये जो मेरी शरीर है वो, उसके अंदर एक कॉन्शियसनेस है जो कि उसमें शरीर के साथ चिपकी हुई है, और मुझे उसको आगे देखना है कि उसका क्या किया जाए, किस तरह से मैं अपने इस नॉलेज और विजन को आगे बढ़ाऊं, ताकि मैं इससे, इनकी जो अटैचमेंट है उससे मुक्त हो सकूं. देन वो समाधि को और आगे बढ़ाता है, अपने शरीर को ठीक से समझता है. तो देन सिंस समाधि इज स्ट्रॉन्ग, and he's obviously presuming jhanas are there, 4 jhanas are there, then he thinks कि क्या मैं अपने मन से अपने शरीर को क्रिएट कर सकता हूँ. I was talking of these now. So from the body he creates another body which is mind made. It is complete in all respects, not deficient in any faculty, but it is all mind made. And इसके एग्जाम्पल क्या है कि जैसे रीड होता है, उसकी शीत है, वो उसको निकाल के शीत को अलग कर लिया, या सांप है वो अपनी केंचली अलग कर लेता है, सांप अलग और केंचली अलग. तो इस तरह से वो एक प्रतिरूप अपना बना देता है, देखता है क्या मैं कर पाता हूँ, ताकि वो शरीर के प्रति जो चिपका है वो छूट जाए कि अरे मैं तो अपने मानसिक बन जाता है, तो इसमें कुछ रखा नहीं. तो इस तरह से वो अपने मन से, समाधि क्योंकि बहुत स्ट्रांग है, वो उसको प्रोजेक्ट करता है, एंड ही क्रिएट्स अ माइंड मेड बॉडी. एंड वेनरेबल आनंद सेज दिस पर्टेन्स टू देयर विजडम. इससे उनको विजडम जागती है कि ये शरीर जो है ये मन से भी बन जाता है. There's nothing
sacrosanct about it, nothing getting worried about it too much. And then further he goes about it, develops various kinds of psychic powers. किस शरीर से लेके दीवारों में से निकल गए, हवा में से उड़ रहे हैं, पानी में से जा रहे हैं, चल रहे हैं और अपना शरीर बढ़ा रहे हैं ताकि उस, I mean, example given is he touches the sky and touches the sun. I mean, I find it quite a task to say कि वो इतना शरीर बढ़ा लिया कि एक उंगली से टच को चांद को और सन को टच कर रहे हैं, and so mighty and powerful. So he realizes he can go right up to the Brahma realm. So he realizes कि ये तो it's not, there's nothing fixed about the body. You know, basically clearly sees इसमें तो मैं कुछ भी कर लेता हूँ, कुछ भी हो सकता है इसका. And it's just like एक पॉटर जो है वो मिट्टी से लेके वही 5-4 जो धातु हैं उसको लेके मिट्टी से कुछ भी बना सकता है. उसी तरह वो इन 4 धातुओं के माध्यम से उसकी इतनी पावर है कि वो कुछ भी बना लेता है. तो उसको समझ में आने लगता है कि ये सब टोटली इम्परमानेंट है, इसका कुछ भी कर सकते हैं. एंड therefore his this psychic power of his, which he develops like that, it also is a part of the wisdom, because it increases his wisdom in terms of the impermanence of every structure, and that the whole body is essentially a conglomeration of 4 dhatus, 5 dhatus, jaisa bhi hum samjhe, and you can always if you have the ability to manipulate these dhatus, you can do anything with the body. So he really realizes in that sense. And then he uses the psychic power to listen to the far off things, clear audience with purified vision, and he can hear all kinds of sounds, human, divine, नजदीक हैं, दूर हैं, सड़क पे लोग चल रहा है, कहीं दूरी पे ड्रम बज रहे हैं, वो उसको सुनाई दे रहे हैं. And इस तरह से जैसे इसका रिजल्ट क्या होता है, that he can know anything now. So that also he says is a part of his wisdom, because now he has the ability to know anything around. किसके मन, किसके यहाँ पे क्या बात हो रही है, he has just focus his mind on that, and he will know what is going on there. So that's another additional. He calls this also pertains idam pihoti panyaya. This also is his wisdom. There are lokiya wisdom, but that is the wisdom of that kind. And now he further develops the mind. And he says, well, everything is mind-made, then let me look into the minds of others. So he starts comprehending the minds of others. अभी तक तो सिर्फ उनकी वाणी सुन रहे थे, अब उनके मन को भी जानने की कर रहे हैं और देखते हैं, अरे मालूम पड़ रहा है इसके मन में तो राग भरा पड़ा है, इसके मन में तो द्वेष भरा पड़ा है, इसके मन में तो बिल्कुल डिल्यूटेड आदमी है, इसका मन तो scattered है. So he can figure out everything about the other people, and he can then read about the minds of others, and he can see, oh, these. It's like the example वो कहते हैं जैसे कोई एक यंग आदमी या औरत है, वो पानी के अंदर अपना चेहरा देखती है कि मेरे गहने कैसे हैं, बिल्कुल उस स्पष्टता से he can see the minds of others and totally comprehend what is going on in their mind. And you can see कि अरे उनके मन में राग जाग रहा है और द्वेष जाग रहा है, राग जागा और खत्म हो गया, द्वेष जागा. So you can see the phenomena, जो हम कहते हैं ना अज्जत बहिद्दावा. So इस नाउ अज्जत तो उसने कर लिया, वो बहिद्दा भी करके देख रहा है कि हाँ ऐसा होता है, सबके मन में राग जागता है, समाप्त हो जाता है, द्वेष जागता है, समाप्त हो जाता है. So that also is this pertains to his wisdom. That also is his wisdom. And then he says, when he has got the ability to perceive the mind in such a manner, तब वो सोचता है, अच्छा मैं अपने मन को भी देखूं जरा क्या है, और आज से पहले मेरा मन कहाँ था. And he starts projecting one after other, and then he starts getting into his past lives. 1, 2, 3, 4, then say 20, 30, 40, 100, 100,000, many eons. So one by one, he can see all his lives, because he now has the ability to find out about the mind. So he can know, where did my mind go before I was born? Where was it? And it's such a beautiful illustration. I feel like reading to you. He says, then he knows, there I was named like this, my clan was that, I looked like that, and this was my food. This is how I felt pleasure and pain, and this is how I felt, how my life ended. And when I passed away from that place, I was reborn somewhere else, and I was named like that, and I was named like that. Every detail he knows. मैं इस जन्म में था, तो फिर मैं यहाँ से इस कारण से मरा, फिर यहाँ पे इस तरह जन्म हुआ, फिर यहाँ पे इस तरह का नाम था मेरा, इस तरह के कपड़े पहनता था, इस तरह खाना खाता था.
सीखी, एंड यहाँ पे इस तरह का प्लेजर हुआ, यहाँ पे इस तरह का दुख हुआ, इस कारण से मैं यहाँ से मेरी मृत्यु हो गई, यहाँ पे इस तरह से डिस्कवर ऑल हिज लाइफ. एंड द एनालॉजी ही गिव्स इज सो ब्यूटीफुल एंड इलस्ट्रेटिव कि ऐसा समझो, सपोज अ पर्सन वाज टू लीव हिज होम विलेज एंड गो टू अनदर विलेज, and from that village he goes to another village, then he goes to another village, and then he returns home and see, I went to that village, then I went to that. So he knows everything about that village, everything, किस village में गया, किस घर में घुसा, कहाँ से गया, कहाँ से आया, सब कुछ उसको याद रहता है. Exactly same way he is able to find out मैं पहले किस घर में गया हूँ और कहाँ से आया हूँ और कहाँ निकला हूँ. So he knows everything about it. So he is then able to extend it and project it towards recollection of his own past lives. And says that also is a great part of the wisdom. And now he goes to the other people. He does the same thing with other people. किसी को देख लिया और उसके मन कहाँ था, कहाँ गया. And now he tries to investigate with that vision of clairvoyance, दूरदृष्टि जो है, दिव्य दृष्टि से, कि ये जब मरा था तो ये किस कर्म से मरा और ये इसका जन्म कहाँ पे हुआ, इसने कैसे कर्म किए थे और उस कर्म के रूप में कैसा पैदा हुआ. Shall just read out to you. With clairvoyance that is purified and superhuman, he sees clearly. आज वो दे लिखने लग गए ही की जगह. Sees sentient beings passing away and being reborn, inferior and superior, beautiful and ugly, in a good place or a bad place. They understand how sentient beings are reborn according to their deeds. These dear beings did bad things by way of body, speech, and mind. They spoke ill of the noble ones, they had wrong views, and they chose to act out of wrong view. And when their body breaks up, after that, they are reborn in a place of loss, in a bad place, in the underworld, in the hell. And so you can see everything. अच्छे कर्म करके यहाँ पैदा होता है, बुरे कर्म करके यहाँ. So the principle of karma is no longer a theory for him. He's seen it actually. And he knows exactly now, fully confident that the principle of karma is operating. And he then understands how sentient beings are reborn according to their deeds. So जो हम कम्मस से का रोज chant करते हैं, he's actually seeing it. And therefore, it is no longer a theory or a belief for him. It is a direct vision he has got of that process. And what is the analogy he gives? If suppose there was a stilted long house, उसे वो होता है ना, जेल में होता है एक ऊंचा टावर, उसके ऊपर एक आदमी को रखते हैं, कौन कहीं जा रहा है, या ये समुद्र के अंदर लाइट हाउस होता है, उसके टॉप पे आदमी बैठा रहता है. So there a person is standing there, a person with good sight standing there might see people entering and leaving a house, walking along streets and path, sitting in the central square. क्योंकि उसका विजन लंबा हो गया तो सब देख सकता है कि आदमी इस घर में घुसा, यहाँ कुछ देर रहा, फिर बाहर निकल के वहां चला गया, फिर वहां चला गया. So the whole idea of reincarnation and getting reborn is like a person entering a house, staying there for some time, then going to another house, and so on and on and on. And then you can figure out कि किस कारण से वो इस घर में से यहाँ इस घर में गया, या अच्छे घर से बुरे घर में क्यों गया, बुरे घर से नए घर में क्यों गया. So he knows, he has a comprehensive knowledge of the death and rebirth of sentient beings. So this is the wisdom aspect of it, and this is what is called the Indriya-PANNA. That is a comprehensive understanding, direct vision of the principle of karma, and rebirth, because they are all intertwined. So rebirth and karma is no longer a theory for him. He's actually seen it directly with his purified vision, with his divine sight. And now, having done all that, when his mind is really comprehensively established in the Indriya-PANNA and he has got strong samadhi, then he starts projecting it towards the knowledge of ending of defilements. ये defilement जो बची है खत्म कैसे होंगी? And then he truly understands, oh, this is suffering, this is the origin of suffering, this is the cessation of suffering, and this is the practice which leads to cessation of suffering. So he actually sees it and does it. So while he's seeing it, he immediately does it. Why? Because he sees this is the defilement, this is the origin of defilement, and this is the cessation of defilement. And once you do that way, it's obvious that he doesn't have to put any effort to do it. अगर मैं देखता हूँ कि मैंने यहाँ गरम तवे पे हाथ रख दिया है
तो मुझे उसको हटाने के लिए सेल्फ व्यू लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं उसको हटा रहा हूँ, मुझे हटा लेना चाहिए, आई शुड लेट गो ऑफ द हैंड, आई डोंट एवर डू ऑल दैट। हाथ जल रहा है भाई, दिख रहा है ना हाथ जल रहा है, तो मैं कुछ सोचूंगा कि मुझे हटाना है कि नहीं हटाना। सो इट्स एज क्लियर एज दैट। So this whole talk which we often get into trouble, कि सन की तृष्णा जाग गई तो तृष्णा को हटाना है कि नहीं हटाना, उसको देखे रहना है कि नहीं देखे रहना, this is because you've not experienced it in that depth. When we understand thoroughly that Krishna is a cause of suffering, why will you hold on to it? दिक्कत है कि we have not understood it सब thoroughly, and therefore उसका जो रस है वो हमको, जैसे भगवान की जो ब्यूटीफुल उपमा है ना, वो हालांकि एंगर के लिए दी गई थी, बट इट्स वेरी अप्रोप्रिएट फॉर ऑल संखारा, It's the, I know the translation, but Pali I can't remember. It is like a poisonous arrow tipped with honey. So we know it is poison. Honey लगी है गुस्से में, गुस्सा आ रहा है तो उसको अच्छा लगता है ना, so it's honey tipped. But we eat it, we attach to the anger, and we die virtually, in terms of taking the poison. So once you know that this is honey-tipped poison, would anybody try to take it? Obviously not. He knows it for sure, and he has seen it number of times. So he is actually seeing it. Oh, this is defilement, and this is the origin of suffering. तो ये इसको पकड़ूंगा तो दुख होगा। 2-4 बार करके भी देख लिए। बच्चा अगर बिजली के तार में हाथ लगाता है और उसको करंट लगता है, कितनी बार लगाएगा? 2-4 बार लगाएगा, उसको समझ आ जाएगी भैया, वो तो भागेगा वहां से। He'll never go in that direction. If he puts his hand in his socket and gets a bit of a shock, he'll run away from there. Because it's known. So there's no issue of am I involving is my ego getting involved? Is it getting this? Nothing at all. It is pure panya. It's pure experience. हाथ मैंने तवे पे रखा, हाथ जल रहा है, तो मैं सोचूंगा थोड़ा ना मुझे हटाना है कि नहीं हटाना, और मुझे इसके लिए एफर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. इट्स नेचुरल. So that is the power of understanding. We have to understand the power of apanya, that once he understands it, then his mind is freed from defilement. The very understanding will free his mind from defilement, because you'll not go into that direction. Understanding is so deep. And then he says, then he understands clearly rebirth is ended, and whatever had to be done has been done, and there's nothing more to be done. That's the end of this. So that's the conclusion, and he gives a beautiful example. That it's like, suppose एक mountain में बहुत pristine lake पड़ी है, और उसके नीचे पत्थर और pebbles और gems और सब पड़े हैं, मछलियां घूम रही हैं, पानी को इतना साफ है, ऊपर से देखता है तो सब दिखता है उसको. So everything is visible. He knows this is, ये fish है, ये gem है, ये पत्थर है, ये poisonous weed है. He knows everything. He won't touch. He knows what to touch and what not to touch. In the same way, when their mind is immersed in such a samadhi, and they are able to project it towards knowledge of the ending of defilement, he knows as it really is. There is suffering, this is the cause of suffering, there is the cessation of suffering, there is the path leading to suffering. That is the Four Noble Truths. That's what the Dhamma Sutta also said. And through this knowledge and seeing, just by knowing and seeing, the mind is freed from the asavas, kama asava, bhava asava. Because once you see that काम आसव से तो आग लग जाएगी भाई मुझे इन तीन को हाथ लगाने में. If I hold on to them, they'll just burn me out. Why will I do that? So that's the, and he says this pertains to practicum. This is, then he conclude, that is the complete spectrum of wisdom which the Buddha praised, and there's nothing more than that. And he concludes with that. And of course, that young boy Subha is overwhelmed and he says, I go to refuge in you, and so on. So that is the understanding of samadhi or panya for us. So we can see the various aspects. One is the Lokiya panya, and one is the Lokottar panya. So Lokiya panya is understanding the law of karma. For us, we work at the moment on faith. So that's why it is said Saddha is the first indriya. So
We don't know the birth. We don't know. We have not seen the cause first. That because of this sankhara, the person is born here. So it's always we always can rationally question it and doubt it and so on. So that's the role of Saddha. That the enlightened one has seen it. His great disciples have seen it, and they corroborate it. And we have a faith that they are not going to tell lie. That is the fundamental Shraddha we have, which, of course, with our practice, slowly and slowly, we confirm. And that is the Lokiya Panya part of it. And then there is the Lokottara Panya, which is Dukkha Jnanam, Dukkha Samudaya Jnanam, Dukkha Nirodha Jnanam, Dukkha Nirodha Namini Patipadaya Jnanam. That is the Lokottara Panya. So that's what we'll discuss further. I think it's time. We'll discuss tomorrow. What are the implications of that Lokottara Panya? So maybe be able to see clearly the cause of suffering and don't touch it at all.